Good morning everyone. Welcome back to Pharma E-Class. I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Ismati College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we start drugs acting on endocrine system. First one is testosterone. So this is the structure of testosterone. Metabolism of androgens. Testosterone in the presence of 5-alpha reductase is converted into DHT, dihydrotestosterone, and in the presence of aromatase only 0.3% is converted into estradiol. Now, SAR of testosterone. So for a substance to have activity, it must contain endostem skeleton. This is the endostem skeleton which is necessary for activity. Oxygen at C3 and C17 position are not essential for androgenic activity. Oxygen at C3rd position and C17th position not essential for activity. The basic nucleus having 5 beta androsten which having androgenic activity, whereas 5 alpha androsten having no activity. Okay, so basic nucleus यदि 5 बीटा है तो वो एक्टिविटी शो करता है, लेकिन यदि वो अल्फा कॉन्फर्मेशन में है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती. There should not be chain constriction or extension because it leads to finished the activity. इसके जो चेन है कार्बन चेन उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं कर सकते, अदरवाइज जो एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है. इंट्रोडक्शन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 3 कीटो ग्रुप इन्हांस द एक्टिविटी. थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन एंड 3 कीटो ग्रुप जो है वो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. नाउ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C17 पोजीशन, दिस वन हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C17 पोजीशन हैज नो एंड्रोजेनिक और एनाबोलिक एक्टिविटी. Halogen substitution produce compound with decreased activity. Halogen substitution produced compound with decreased activity except when placed at C4 और C9. यदि halogen substituents को C4 और C9 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आता. मतलब बाकी अदर जगह पर यदि हम हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन C4 एंड C9 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करने पर एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती. इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड एट C1 पोजीशन इंक्रीज द एनाबॉलिक एक्टिविटी. दिस इज अ C1, दिस बॉन्ड. Replacement of carbon atom at C2 position by oxygen gives oral anabolic activity. सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किया जाता है तो ओरल एनाबोलिक एक्टिविटी शो होती है. नाउ सेकेंड इज ईस्ट्रोजन. सो द 3 मेन ईस्ट्रोजन are used: estradiol, estrone and estriol. So these are the structure of estradiol, estrone and estriol. Now SAR of estrogen. This is the structure of estrogen. Steroid nucleus is not necessary for estrogenic activity. Many constituents of plants like ginseng, commistrol don't contain steroid nucleus but possesses estrogenic activity. The biologic activity varies with the mode of administration of estrogen. The order of activity of 3 naturally occurring steroids when administered
subcutaneously is estradiol, estrone, and estriol. The order of activity changes to estriol, estradiol, and estrone when the drug are administered orally. Estradiol is not effective orally due to rapid metabolism in liver, but placement of ethinyl group at 17th position, this one, ethinyl group substitution at 17th position increase the resistance to metabolic inactivation and make the compound orally effective. Similarly, methylation of 3-hydroxy at 3rd position, this one. Example, masternol make the compound orally effective. Ester derivative, acetate and benzoate of the naturally occurring and synthetic estrogens have prolonged action. Insertion of hydroxy group at 6th position, 7th position and 11th position reduces estrogenic activity. 6th position 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6th, 7th, 8, 9, 10, 11th and this one is 11th. So 6, 7 and 11th position पर यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो एक्टिविटी रिड्यूस होती है. Metabolism of estrogen. Estrogen in the presence of estrogen 2,4-hydroxylase is converted into 4-hydroxyestrogen. Then 4-hydroxyestrogen in the presence of COMT is converted into 4-methoxyestrogen. And estrogen is also converted into 2-hydroxyestrogen in the presence of estrogen 2,4-hydroxylase. And in the presence of COMT, this 2-hydroxyestrogen is converted into 2-methoxyestrogen. Metabolism of estradiol. Estradiol in the presence of estradiol dehydrogenase is converted into estrone, and in the presence of 16-alpha hydroxylase, estrone is converted into 16-alpha hydroxyesterone. And estradiol is also converted into estradiol in the presence of 16-alpha hydroxylase, and then estradiol and 16-alpha hydroxyestrone is interconvertible in the presence of estradiol dehydrogenase. Now progesterone. So this is the structure of progesterone. SAR of progesterone. Steroidal nucleus is essential for activity. Steroidal nucleus, this one, cyclopentanoperhydrophenanthrin ring, that is steroidal nucleus, which is essential for activity. Substitution at 17th alpha with ethyl reduces activity. 17th position पर यदि ethyl का अल्फा कॉन्फर्मेशन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्फा कॉन्फर्मेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक्टिविटी रिड्यूस होती है. इथिनड्रॉन मोर एक्टिव ओरली देन प्रोजेस्ट्रॉन. रिमूवल ऑफ CH3 एट C19th पोजीशन इज मोर एक्टिव. यदि इस CH3 ग्रुप को, दैट इज 19th पोजीशन, CH3 ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थिनड्रॉन. अनसैचुरेशन ऑफ B और C ring of 19th androsten derivative increases activity. B and C. This is the B ring and C. So unsaturation of B ring and C ring increases the activity. Acetylation of 17th beta hydroxy of norethindrone, long duration of action.
17th बीटा पोजीशन, दिस वन 17th बीटा पोजीशन पर यदि एसिटाइलेशन किया जाता है, एसिटाइल ग्रुप अटैच किया जाता है, तो एक्टिविटी जो है उस कंपाउंड की, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इथिनाइल estradiol and mastenol are most frequently used. Levonorgestrel is the most common progestin which is used worldwide. This is a structure of levonorgestrel and structure of mifepristone. Okay, this is all about drug used in endocrine system. Thank you.